मैं अभी नींद से उठी और मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा उठने का। संडे बन गया मेरा संडे। वो भी सो के उठी। हाय गुड मॉर्निंग। बचपन से ही ना किमी मम्मी पापा जब भी बाहर जाते कहीं यहीं पे बैठे रहती है। इज दैट मम्मी पापा बाहर गए हैं एंड इसीलिए आई एम जस्ट चिलिंग एट होम। संडे प्लान भी मेरे बेसिकली हैं नहीं। गुट्टू गर्ल चाय इज रेडी गाइस। गुट्टू गर्ल। अगर जल्दी है तो बाहर जाऊंगी वरना तो आई स्टे एट होम। एंड टुडे विल बी द टेस्ट ऑफ दिस कैमरा। क्या ये बाहर ब्लॉक कर सकता है? बूम, आई एम रेडी। आई विल गो आउट इन सम टाइम। दिस इज वॉट आई एम लुकिंग लाइक। थोड़ा प्रेजेंटेबल ऑफ कोर्स। कितनी प्रोफेशनल है भाई तू। सैल्यूट। थैंक यू गाइस, थैंक यू। Guys, subscribe to her. She's very hardworking and very serious towards her content. Oh my god. And it's worth giving her the subscribe, like and love that she deserves. She's very hardworking. You should press the subscribe button. ओह थैंक यू। ऐसा प्रमोशन करे दोस्त ऐसे होने चाहिए भाई। गुपचुप ट्रीट। No pockets. सी बॉयफ्रेंड ही बना दी दोस्तों। हम जूडियो गए बट इतना कुछ खास मिला नहीं हमें चीज़ें सामान। बट देर वर फ्यू कलेक्शंस। हमें एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था टू ट्राई फॉर इट बिकॉज बहुत लंबी लाइन लगी थी संडे एंड इट वॉज एक्सट्रीमली क्राउडेड सो देर वॉज नो पॉइंट ऑफ checking out the clothes anymore. थोड़े खाली टाइम पे तो maybe it would have been fruitful but I don't think so it was that much. Anyways, we are heading towards home and I'll meet you Later. after Toodles. Say bye to Simran guys. Toodles. ये किस टाइप का क्या चल रहा है ये? ओए किमी देखो। I just wanted to show you guys something. मतलब बहुत ज़्यादा delusional बातें हैं ये सब but I literally designed a diary for myself. इसमें literally मैंने लिखा है 1M. Like I'm very delusional. So basically I maintain this diary to write my ideas if I am getting any ideas or basically it's like my content ideas compiled in these diaries. And apart from lifestyle vlogging, I also want to share some insights or some knowledgeable stuff with you guys. So if you're interested in that sort of content which will help you to make your daily life better, then do let me know. It will be really helpful. So I'll do that and I'll meet you after some time. It's a working day, so I'll be logging right now. And let me switch on this light better. I've already prepared my breakfast and I'll show it to you right now. I'm having eggs, a little bit of chili flakes and oregano. Go now and sit for work. I'll meet you after some time. You are a mean little man. You brought a log off for the day and I'll meet you tomorrow. I'm just too tired to even continue the editing, so I'll probably just sleep after my skincare. So meet you tomorrow. Hi, I took a bath. I look so tired at the moment. मुझे अब समझ में आ रहा है I'm getting hormonal mood swings. So that time of the month is coming again.
Good morning. Good morning. Good morning. I'll, set up this space. मैंने वर्कआउट तो कर लिया बिकॉज दिस वॉज वेरी डिफ़िकल्ट. एक गद्दा पलटाने में जो मेहनत लगती है ना. Hi, I'm all ready for the meeting and I'll meet you after finishing my working hours because I know that it's gonna be hectic today. So the work has still not started yet, but once it gets started then it's gonna be hectic. So I'll meet you after my shift. I got sick. I have bad stomach upset. पूरा दिन मेरा बर्बाद हो गया ऐसे ही. I'll sleep. सुबह के 6 बजे ये सब नाटक हो रहा है. पता नहीं कौन सी जंग लड़ने जा रहे हैं मेरे कुत्ते. I'll show you the sunset anyway. Or sunrise. Bolu? Hey Bolu! কি করছিস? I will set up this bed and with the snap of my finger you're gonna see the bed sheet being changed. I'm not gonna snap. I'm gonna just. Now I just got ready to go to the airport and pick up my sister, and if I get the chance I'll definitely do some driving, but yeah, I'll meet you later. आ गई. अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आपकी खुशियों के पल छीन सकते हैं. जाओ ले लो. Well, I am just recording. She is the one actually making the dinner, and we are having. We'll all will have egg roll. So I hope you don't mind the anger. Give me that. Biscuit. Give me biscuit. इतना बेवकूफ बनाओगे तुम? इधर बच्ची है क्या? ये देख एने. আমি ব্লু কালারের অর্ডার করতে বাধ্য হয়েছিলাম, পিঙ্ক ছিল না বলে. পিঙ্ক এসে গেছে ওর. কারণ আমি আবার সেট করে দিই. দাঁড়া. ভয় পাচ্ছে তুই আবার ওর সামনে হচ্ছে. ও ওটা স্ট্যাটাসটা ভালো করেছে, তারপরে ও বুঝতে পারছে. আমরা খেললে বোধহয়. I'm going out. So let's get ready together. I'm gonna use this serum, niacinamide from Ordinary. I'm gonna just put 2-3 drops on my face, and remember not to touch the drop to your skin. Heavy sunlight anymore, so I would prefer the moisturizer just to make my skin look a little bit plumpy, and it looks like that I drink a lot of water. So that's why I'm applying moisturizer now. Dots of foundation, K Beauty foundation, blend it even more to make it look
I'm actually looking at the viewfinder right now, so don't mind. काजल, ताकि आँखें थोड़ी ब्राइट लगे. Maybelline Sky High Mascara, and this stuff makes my eyelashes looks a bit more spidey. So I'm looking for a product. It gives a good volume though, but I'm looking for a product which does not makes my eyelashes look spider legs. You know what I mean? It should have a seamless, application. So if you have any products in suggestion, so do let me know. Mascara application is done. I don't think so you are able to see anything because of the light. This lip shade from K Beauty. It's a magnetic dhakkan, like so nice, and the shade is Snapshot. And I am ready. I hope my makeup looks good. My makeup looks good. This is how I'm looking. I'm gonna wear my watch, and I'm gonna carry this bag, just because I'm going for a shopping and I don't need to buy another bag just to keep my clothes. So I'm carrying this tote bag which I made from scratch. I learned crocheting, so yeah, I made it through that. I am ready. Let's go. मेरे घर वाले डर जाते हैं मुझे गाड़ी देने से. इतना ही था यहाँ तक. अच्छा गाड़ी What's up नंदी महाराज? होएचे बुलू मेरे सामने नाटक करता है. ये सारे इसके मेरे सामने नाटक करेंगे. ऐसे में सबके दोस्त है ये. ओए! I know the video is not ending in a very good note, but the story behind the damaged car is that, so basically my parents were going to the airport. They dropped my sister बिकॉज उसका फ़्लाइट था उस दिन, एंड उसके बाद वापस आते वक्त अनफॉर्चुनेटली गाड़ी को एक ट्रक वाले ने धक्का दे दिया. सो गलती पता नहीं किसकी थी, दोनों भिड़ गए. आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरिया था, तो गाड़ी में बहुत बड़ा डैमेज हो गया. इसके वजह से वी हैड टू सेंड द गाड़ी ऑफ कोर्स टू द सर्विस सेंटर, एंड अभी तक वी आर वेटिंग फॉर द इंश्योरेंस कंपनी की कितना क्या होता है. बट चूना तो अच्छा खासा लगा है. So I'm not gonna see the car for like 15 days or so, cause काफ़ी पूरा I guess पूरा पैनल ही चेंज करना पड़ेगा. So ये थोड़ा सैड न्यूज़ हो गया for us, but accidents are meant to happen. लाइफ हमेशा कभी भी आपको सेम पेस में नहीं दिखेगी. ग्राफ विल ऑलवेज डिफ़र, ऊपर नीचे होते रहता है ग्राफ. सो ये सब एडवेंचर्स होने चाहिए लाइफ में ताकि आप सीखो. So yeah, ending it in a note where we are learning about life. Hi, if you have made till this part of the video, then comment down below this emoji and I'll know that you are the true ones. Thank you so much for watching this vlog. If you liked it, then don't forget to like, share and subscribe, and I'll meet you really soon with the next vlog. Till then, bye bye, take care.